Hey guys, welcome back to another video. I actually recorded the whole thing and I'm re-recording it because the audio for some reason could not able to get captured. So yeah, I'm probably going to separate it in different things. Yeah. So what we are going to do is that I actually told it pretty much for a long amount of time, but yeah. So basically, we are going to talk about Levenshtein distance. Basically, if we wanted to find some errors in a particular string, let's say I wanted to call a language or not, I wanted to type in Google that मुझे स्पेड लिखना था एंड फॉर सम रीज़न आई टाइप्ड स्टेट या मुझे स्टेट लिखना था आई एक्सीडेंटली टाइप्ड स्पेड. तो अब वो जो एरर है वी हैव टू करेक्ट इट राइट दैट. अब जो करेक्शन हमें करना है तो करेक्शन के लिए देयर नीड टू बी some things we need to change, right? So if we wanted to change that particular thing, what will be that thing? The thing will be a distance. The distance, we have to minimize the distance as much as possible. Imagine there is long errors, तो पूरी की पूरी word ही change करनी पड़ जा रही है. That is not an optimal thing, right? But even if I have to change it, how much can I optimize that particular thing? To optimize that particular thing, we are using something called dynamic programming. Why we are using dynamic programming? The reason why we are using dynamic programming is because the idea is something like कि हमें यहाँ से सारी की सारी वर्ड्स को निकालना है, फिर उसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और उस एम्प्टी स्ट्रिंग को लेकर उसके अंदर न्यू जो प्रॉपर करेक्टेड वर्ड है उसको पुट करना है. Now the thing is we have to find the minimum cost of it. अब मिनिमम कॉस्ट की अगर हम निकालने जाए तो व्हाट इज़ द इशू देयर? द इशू इज़ दैट कि हमें वो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए लाइक वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल थिंग. तो यहाँ पर कितने स्टेप्स लग जाएंगे? तुम्हारे 5, तुम्हारे 6, तुम्हारे फिर से 5 लग जाएंगे लेट्स से. तो हम वो चीज़ ब्रूट फोर्स है राइट. 11 स्टेप्स लग रहे हैं तुम्हें या फिर 10 स्टेप्स पकड़ लो तो 10 स्टेप्स लग रहे हैं तुम्हें राइट. सो दैट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल थिंग. व्हाट डू यू वांट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट? यू वांट कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, वही बहुत है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस स्टेट टू स्पीड. ओके, फॉरगॉट द सेंटेंस, एक्चुअली रोट द सेंटेंस रॉन्ग. हमें क्या करना है कि हमें स्टेट को स्पीड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, दिस इज़ आवर टास्क. नाउ दिस इज़ प्रिटी टीडियस टास्क टू डू. तो खैर ये चीज़ मैंने पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने टोटली खुद से बनाया था ये सारी की सारी चीज़ें. बट राइट नाउ एज आई एम री रिकॉर्डिंग दिस थिंग देर माइट बी सम इशूज़ विच आई माइट कम into this while recording it. So yeah, this is the whole idea of what is the problem statement. मैं यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉर्ड को बंद कर रहा हूँ to check the audio if it's correct or not. If the audio is correct, I'm just going to move forward and do the other stuff. So basically, what is the next thing? So remove this right here. तो हमें क्या करना है? अब हमें कन्वर्ट करना है स्टेट को स्पेड में. व्हाट इज़ आवर टास्क? हमें कन्वर्ट करना है स्टेट को स्पेड में राइट. अब नाउ अगर हम बहुत ऊपर से देखें तो व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ इट? अगर तुम यहाँ से देखो इस चीज़ को कि यहाँ से हम स्टेट को स्पेड में कन्वर्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ द मिनिमम टास्क? मिनिमम कॉस्ट. द मिनिमम कॉस्ट इज़ 2 राइट. हमें क्या कौन सी चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ रही है? हमें टी और ये वाली टी को कन्वर्ट करनी पड़ रही है टू पी एंड डी राइट. दीज 2 आर द कन्वर्जन्स. तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हम एक बड़े लेवल पे इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इफ़ आई वांटेड टू फाइंड इट इन अ मिनिमम कॉस्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वी हैव टू लाइक loop over it every time and I have to like loop over the entire thing
हैव टू फाइंड ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं. लेट्स से द वर्ड वी टाइप्ड इज़ ST, एंड अगर हम स्पेड को मीन करना चाह रहे हैं तो हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू बेयर. सो दैट इज़ द थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हियर. ये जो पास वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने एक्चुअली में पूरा का पूरा बनाया था. अनफॉर्चुनेटली मैंने बनाना दिखाया था पर खैर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है. जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो deleting this one deleting, this one deleting. Okay, these I'm just going to delete all these things from here. How can I actually tap it? Yeah, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज़ द आइडिया. यहाँ पर दिस साइड विल गोइंग टू, यहाँ पर हमारा रिजल्ट रहेगा. ऑन दिस साइड देयर विल बी द रिजल्ट. इन दिस साइड देयर विल बी द इनपुट व्हाट वी आर टाइपिंग, या कौन सा इनपुट है जिसको चेंज करना है, ठीक है. व्हाट माइट बी द रिजल्ट. तो यहाँ पर ऑन दिस साइड दिस इज़ इनपुट, दिस साइड इज रिजल्ट, ठीक है. अब नाउ द थिंग इज़ कि रिज़ल्ट हमें बनाना है और इनपुट हमें डिलीट करना है. दिस इज़ द आइडिया. अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया. तुम्हें इनपुट को डिलीट करना है और रिज़ल्ट को बनाना है. तो अगर तुम्हें इनपुट को डिलीट करना है, तो अगर लेट्स से तुम्हें ये चीज़ टोटली कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करती है. तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग एंड यू वांटेड टू कन्वर्ट इट टू नथिंग, लेट्स से वांटेड टू कन्वर्ट इट टू नथिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट कि लाइक you can pretty much to convert nothing, to convert an empty string to an empty string, both are the same thing, so you don't have to bear any cost, right? So if that's the case, you can just pretty much put a zero right here. What is the cost? We're going to write all the cost right here, so you can pretty much put a zero right here. What do I mean by zero? Is that the only cost you have to bear when you are converting a empty string to an empty string is zero. That is true, right? When you are converting an empty string to an empty string, you don't have to bear any cost. But when you are converting an empty string to S, okay, focus on this S only, okay, focus on this S. If you are converting an empty string to S, what do you mean by S? I mean S. So your plus 1, your cost is 1 because you like inserted something, right? So your cost is 1. Get the idea? Your cost is 1. Just like that, if you put if your input is epsilon means empty, okay. If this is called epsilon. If you have no idea about automata or any like compiler design, this might be unfamiliar, but this sign means epsilon. So if you have epsilon and you want to put SP, you have to change your epsilon to SP. What is the cost you might have to bear? The cost is 2, right? Why 2? You got the idea. Because what we are doing, we are converting an empty string to SP. Similarly, this will be 3, this will be 4, this will be 5. Cool. Now what we are doing, we are converting an S to an empty string, right? If you are converting an S, in the next row
we are converting the s to an empty string. If we wanted to convert an s to empty string, what should I have to do? I have to, what is the cost will be? The cost will be 1, because if I wanted to convert s to an empty string, rather than doing insertion I have to delete it, but eventually the cost will be 1, obviously. Similarly, on this particular case, s and s are actually equal. The s and s right here is equal, so should I have to bear any cost if I wanted to convert s to s? I should not. That should I write? I should not have to bear any cost. But if I wanted to convert an s to an sp, then I have to insert, right? So what is the cost will be then? The cost will be 1, because we are inserting. Give me some time for formatting. Okay, what is the next thing? You have to convert an s to an spa, then you might have to bear a cost of 2, similarly 3, similarly 4, because we are just adding it. Similarly, if I go to t, so the t cost will be 2. Why? We are converting the s and t to an empty string. To convert an s and t to this convert an s and t to empty string, it will cost us 2. Then what we're going to do, we're going to put something like, if I wanted to convert st to s, what is the conversion? So the cost will be 1 only, because the s is already exist and I have to delete only t, so the cost will be 1. What is the next thing? If I wanted to convert st to sp, let's say, so the cost will be 2, because I have to remove the p, or so the cost will be 1 actually, not 2, because it's just we are converting this t, we are converting this t to p, so you are replacing this, so the cost will be 1. Okay, what is the next thing? The next thing is we are converting st to spa, right? So if I wanted to convert st to spa, at first I have to bear the cost of t, replacing t with p, and then we are inserting a right here, so the value will be 2. The next thing, we are converting s to spad, so this will be what, converting t to p and adding 2, so this will be 3, if I'm not wrong. Yes, the next will be 4, because we are adding e right here, we are just inserting it. Similarly, I'm just already explained it right here. You can pretty much go through this particular thing all by yourself, or you can do one particular thing, which is just converting. I'm going to give you an example. If you have already completed it, there is an this is the basically the done part. So what you can do, you can convert something like project. This is an assignment for you, so you can convert project to pocket, all by yourself. This is a nice little assignment for you. I think this does not need more explanation. It's just the similar thing. One only thing you have to understand is that when you completed this whole thing, this one
will be the last diagonal value will be your answer or the minimum cost you have to bear. So this one is the minimum cost. You can see if I wanted to convert state to spade, I have to convert this T to P and this T to D. So the minimum cost of it will be 2. So this is the algorithm for it. We have to use DP. So this is pretty much the algorithm. I don't want to explain the whole algorithm thing, like the things which are more or less explained mathematically. I just don't like those ideas. But if you wanted to convert of these particular things, just practice a little. You're going to be going to get little good at it eventually.